हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं हमारे स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए शेयर मार्केट से जुड़े कॉन्सेप्ट्स की सारी जानकारी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमोडिटी मार्केट का नाम तो आप सबने सुना होगा, तो क्या आप जानते हैं ये होता क्या है? इजी लैंग्वेज में, market where various commodities and their derivative products are transacted in is called the commodity market. A commodity could be any raw material or primary agricultural product that is marketable. In short, it can be bought or sold. It could be wheat, gold or crude oil among many others. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के commodity market के बारे में। बेसिकली इंडिया में 3 तरीके की commodities ट्रेड होती हैं। पहली, metals like gold, silver, platinum, copper and many others. Second, energy, crude, heating oil, natural gas, agricultural products, corn, soybean, wheat, rice, cocoa, coffee and many others. And just like how the stock market has BSE and NSE, the commodity market exchanges have multi-commodity exchange, national commodity and derivatives exchange, National Multi-Commodity Exchange, Indian Commodity Exchange, and ACE Derivatives Exchange, along with the Universal Commodity Exchange. Now let's see how can you trade in these commodities. ये ट्रेड करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा अपने ब्रोकर के साथ who is registered with the commodities market. Note that you only need a trading account and not a demat account, because in this commodity market, you are dealing with actual physical goods which cannot be converted into electronic form. You can trade in the commodities market in 2 ways, through a futures contract or options contract. तो आइए बात करते हैं MCX पर ट्रेड होने वाली commodities की। आप इन सिक्योरिटीज को जहां पे ट्रेड कर सकते हैं। The first is bullion, like the gold, silver and platinum. Energy resources like natural gas, crude oil, along with agricultural products like castor seeds, cardamom seeds, black pepper, cotton, etc., along with metals like lead, zinc, copper and nickel. अब जानते हैं NCDX पर ट्रेड होने वाली commodities की। The NCDX allows trading in 23 commodities, highest amongst all trading commodities and trading markets. Cereals and pulses, chana, barley, rajma, wheat, etc. Fibers like kapas, 29 mm cotton, spices like turmeric and coriander, jeera, oil and oil seeds like castor oil, cottonseed oil, soya bean, refined soya oil, mustard seed, crude palm oil and many others. Coming to guar complex, guar seed, guar gum, refined splits, etc. We also have index products. The AgriDex commodity trade will take place on all days of the week from Monday to Friday. This excludes Saturdays and Sundays, और वो holidays exchange ने पहले declare कर रखी होती हैं, like public holidays. Normally commodity market open होता है from 9 AM and closes at 11:30 PM. There are some advantages and some disadvantages of trading in commodities. Let's discuss them one by one. Commodities में trade करने के advantages हैं diversification of portfolio. Also, it saves you from risk of inflation and it gives you opportunities of hedging. एडवांटेजेस के साथ साथ इस ट्रेडिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि कमोडिटी ट्रेडिंग बहुत वॉलेटाइल है और आपको बहुत क्विक लॉसेस हो सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। यहाँ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन का डिसएडवांटेज नहीं होगा, लेकिन आपको प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड मिलेंगे। विद ऑल दीज प्रोडक्ट्स, एक जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि कमोडिटी मार्केट्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू हाई रिस्क. Hence, you should research into all parameters properly before investing. I hope this video helped you in understanding what commodity market is. Thank you, stay tuned, and keep watching to our videos. For future updates and queries, visit social media handles of TradeSmart.